well its impact on Odisha as well. So in this class I will complete this one. Before this lesson we were going through that what exactly the meaning of cyclone and what is the definition, what are the condition needed. So all these things we talked about in the last class, like types of cyclones we were going through that, location of Odisha, tropical cyclones, these things we talked about in last class. Okay, now the distribution of tropical cyclone, this also we talked about in last class. Tropical cyclones over the Bay of Bengal. Okay, now these things also already covered, the things which is necessary or the condition which is necessary. Even we also went through, that is the anatomy of a tropical cyclones, like what is the eye wall, rain band, inner rain band, outer rain band, all these things we went through last class. So we will go through today, that is the formation of tropical cyclones. So this thing we talk about, that what are the features, like vertical feature and horizontal feature characteristics of tropical cyclones as well. In this lesson we will go through the formation of tropical cyclones, origin and development of tropical cyclones. The rest things like the condition which were needed for the development and the growth of tropical cyclones we talked about in last class. The first of all we will go through the seasons of tropical cyclones. Okay, what are the seasons? When exactly the tropical cyclone forms in a year? So season could be 3 seasons. That could be your pre-monsoon, that could be the pre-monsoon time, or it could be during monsoon. Let's say that could be the during monsoon, and it would be post-monsoon. So 3 times exactly the forms. 3 times, one before, then during, and then post. These are the 3 important times. When I say pre-monsoon, that means it will start from April to May. So during monsoon means like July, August, September, like this. So it could be July to September, let's say, and post means October to December. सुनाओनी अच्छा अच्छा म्यूट थी लगी एटा ओके ओके एजेंटा हमें पढ़ी देइथिले कि आज खाली ओरिजिन टा पढ़िबो, ओरिजिन टू तो ओरिजिन रे में बेसिकली मानसून जो फॉर्मेशन हुए, कारण ये कंडीशन एरिया हमें लास्ट क्लास रे देखि देइथिले, हां कि नहीं एटा देखि देइथिले। स्टेट हमें एठू आज स्टार्ट करबा कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एग्जैक्टली द सीजंस दाए सीजंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स साधारणतः हमें तीनटा सीजन रे ताको डिवाइड करि थाउ। सीजन 1, that is the pre-monsoon. Season 1 pre-monsoon. Season 2, that means ko time re formation hobo, it would be during monsoon, and that would be the post-monsoon, and next one would be the post-monsoon. So tinita time re exactly tropical cyclone formation हुए यदि हम देखिबा। सो ड्यूरिंग monsoon, so pre-monsoon हे परे, during monsoon हे परे, post-monsoon हे परे. So these are the times यदि हम देखिबा tropical cyclone exactly forms in this particular time रो tropical cyclone formation हुए. Done. now हम देखिबा formation of tropical cyclones. Formation of tropical cyclone केमती formation हुए? For example, if I go through this figure, now I will go through this figure. Formation of tropical cyclones. How does exactly a tropical cyclone form? Let's say if figure कथा भूली जाओ, completely just forget this figure कि there is no figure. Okay, just forget it कि there is no figure.
Now, sea surface temperature, how much temperature we need? 27 degrees Celsius, we need the sea surface temperature for the formation of tropical cyclones. 27 point, that is the 27 degrees Celsius we need for the formation of tropical cyclone. Okay, for the formation of tropical cyclones, we need 27 degree Celsius, that is the sea surface temperature. For, let's say, what will happen in this particular surface residuum, all the conditions are satisfied. Let's say the conditions, given condition or the required conditions are satisfied. If the required conditions which is necessary for the growth and development of tropical cyclones are satisfied, then tropical cyclone wind forms. How? Now, tropical cyclones, if I say the eye of tropical cyclone is always a low pressure, it's always a low pressure. Now, if I is low pressure, that means as I move towards the periphery of tropical cyclones, in all direction, what will happen? That the pressure will increase towards the outside. Let's say the center will have, that is the 90 MB millibar. जदि आम कहबा जे आई रो जो आम कहबा प्रेशर टा अछि लो रहिबो, as they move towards the surrounding region or towards the periphery of tropical region, what will happen? That the temperature, or sorry, that the pressure will increase. What will happen? The pressure will definitely increase. Okay, there would be increase of the pressure. Obviously, I will say what will happen? The increase of pressure. Pressure will increase. Hey, dhire dhire bahar ko jetro ami jiba, pressure will increase gradually. There would be increase in the pressure. Okay, there would be increase in pressure. As I move towards the periphery, there would be increase in the pressure. The pressure will increase. So here, let's say it would be 90 MB, as this is 90 MB. As I am moving outside, so what will happen? Then it would be 100 MB, then it would be 110, it would be 120, like that the pressure will increase. So that ताको हमें compare कले, this would be low pressure. Surrounding region जिते हमें बाहर को जिबा, as the pressure will increase in terms of millibar अनुसार pressure जिते हमें कहबा increase करूची. ओके, एमती बाहर को गले pressure टा कोन हो जाए, increase हे जीवो. तो दैट मीन्स जदि ये प्रेशर सबुठ लो अच्छी, जदि हम देखा जहाँ कहे 90 MB एंड सराउंडिंग रीजन रे मु नहीं गली 100 MB, 100 MB रो प्रेशर अच्छी. ओब्वियसली 100 रू 90 को एयर फ्लो करिवो, हाँ कि नहीं? ये तो बुझा पड़ो समस्त को, कारण ये प्रेशर अधिक अच्छी, 100 अच्छी, ये 90 अच्छी. दिस वुड बी लो, तेणु करके एयर विल फ्लो फ्रॉम 100 टू 90. बट आज द एयर फ्लोज व्हाट विल हैपेंस. अच्छा, मु आपको गोटे काम करी, व्हाइट बोर्ड नहीं जाऊँगी, इट वुड बी मतलब इजी हे बुझे, व्हाइट बोर्ड नहीं जाऊँगी मु. Now whiteboard is coming to all. Fine. Okay. So let's say sea surface temperature I mean गोटे जगह रही 90 MB and the surrounding region रही 100 MB. Okay, surrounding region, every region is having like the 100 MB रो हमें देखियो पड़िबो हमको कोन अछि, that is the pressure. So as this one is the low pressure, when I compares to these things, when I compare to the surrounding region, this is low pressure. So air will move to the center. Obviously, low pressure को air move करे from the surrounding region, but with the presence of Coriolis force, they will deflect like this. They will deflect like this. They will deflect like this. So that the what air will have anti-clockwise. ये कौन रहबो हमरो anti-clockwise move करे को लागिवो. That means I will say the air over that particular region, it will started to rotate anti-clockwise. It will started to rotate anti-clockwise in northern hemisphere, and southern hemisphere kon hijo clockwise hijo. As this air will started to rotate, so it will develop a circle. ए गोटे kon कहते circle हिजबो. ए circle को कहा जाय isobar. Okay, that means ये गोटे band आको हम कोन गोटे band create करिवो, जाको हमें बैंड भी कहि परबो. गोटे एयर फ्लो करूची एमती
कारण ये एयर सेंटर रे पहुंची पारिबो नहीं बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स है ना सो दैट कौन हम ना ये गोटे सर्कल एमती गोटे आमर आइसोबार फॉर्मेशन हो गला तो ये आइसोबार वंस फॉर्मेशन हो गला परे now that will the center area will be known as the eye unless and until the that is what isobar is not developing जे पर्यंत आइसोबार डेभलप न करूची दैट मच सेई टाइम जे हमें ताकू कहि परिबानी आई रो फॉर्मेशन हेई परिबो नाही तेणु आमको दरकार कोन ना बैंड एयर फॉर्मेशन होबा दरकार जोटा हम कहली कि एटलिस्ट आम देखा आइसोबार गोटे फॉर्मेशन हो गले सेटा कोन हिजबो आई रे कन्वर्ट हिजबो तापरे मिडिल पोर्शनटा जोटा रहइबो सेटा हमें ताकू आई कहबा तो आई जदी हमें देखबा कि अनलेस एंड अंटिल आइसोबार ता चारिपटे गोटे नो फॉर्मेशन हिची ताकू हमें आई कहि परिबा नाही तो आई वाल दैट मींस आई को घेरी की जो विंड टा ये कोन रहइबो दिस वुड बी द फास्ट विंड एटा बहुत ही फास्ट फ्लोइंग विंड रहइबो जाको हमें आई वाल बोली कहूचे कारण आई वाल केमती फॉर्मेशन हला बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड अदरवाइज दिस विंड कुड हैव रीच टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट है ना एठी पहुंची सारी पारी थांता but due to the presence of Coriolis force they are not able to reach to the center of this particular point they are deflecting and rotating like this and rotating around this low pressure this central low pressure तो central low pressure को कहले हमें I and आ चारिपटे जो wind बुलेला को कहले हमें I wall again same thing that means let's say the I wall would be 100 MB and the I would be 90 MB ना आई वाल रो जेतरा में बाहर को आउट के जवा 110 120 130 लाइक दिस ओके प्रेशर कोन हिजबो ना इंक्रीज हे की जीवो ना भी हमें आउट जस्ट अगेन this one if I compare this one this 110 MB with the 100 MB कोन हबो तले 110 is high pressure ये कोन रहबो हाई प्रेशर जदी आकु हमें कंपेयर करिबा तो that means 110 एमती एठी भी 110 थिबो this region will have 110 this region will have 110 all surrounding region will have 110 MB रो हमको air pressure देखियो मिलिबो so from this particular point the air will try to move to the center but again they would not be able they will rotate like this ए भी कोन हिजबो एमती रोटेट हेजबो एंटी क्लॉकवाइज तो एमिति नंबर ऑफ बैंड फॉर्मेशन हबो नंबर ऑफ हमको कोन देखाजबो सर्कुलर बैंड फॉर्मेशन हबो धीरे धीरे नंबर ऑफ आइसोबार फॉर्मेशन हे की जीवो तो जेते आइसोबार फॉर्मेशन हबो मैच्योर आमे कहबा कोनोसी साइक्लोन को whether that cyclone is matured or not that would be determined on the basis of what on the basis of that is the isobars on the basis of isobars त केतेटा आइसोबार अछि से आइसोबार को नै की डिटरमाइन करा जो whether that cyclone a tempered cyclone यदि हम कहबा से साइक्लोन टा गोटे मैच्योर हेछि ना तार इनिशियल स्टेज रे अछि ओके तो सेटा नंबर ऑफ आइसोबार ऊपर डिपेंड करे अच्छा एथर किछि डाउट अछि यदि पचार दियो किछि डाउट अछि जे केनती आइसोबार फॉर्मेशन होछि कि कोन एथर किछि डाउट अछि आइसोबार केमती फॉर्मेशन होछि तो आइसोबार एमती फॉर्मेशन हे जीवो अगेन आउथरे मु रिपीट कर दोछि आई केमती फॉर्मेशन होई ना आई फॉर्मेशन केतरा हबो लेट्स से एटा गोटे लो प्रेशर नियर बाय रीजन रो विंड फ्लो करबो किंतु विंड ता केमती हिजबो एंटी क्लॉकवाइज बोली कि आई फॉर्मेशन हिजबो आई परे पुनी आउथरे आई वॉल इनर वॉल एमती फॉर्मेशन हबो ना आई रो एयर कन्वर्ट करी के ऊपर को जबो तो ऊपर कोन रहइबो हाई प्रेशर रहइबो हाई प्रेशर अपर एटमॉस्फेयर विंड कोन करबो डाइवर्जन तळी कोन होची कन्वर्जेंस ऑफ विंड अपर एटमॉस्फेयर डाइवर्जेंस करछु सो दैट क्लाउड सब फॉर्मेशन हबो एठी एंड नंबर ऑफ हमको क्लाउड देखा जबो है ना तो ये कोन हिजबो पूरा सिस्टम टा एमती थाए एबे हम जो स्लाइड्स हमें नाउ हियर वी विल कम टू द फिगर एबे फिगर को हम आसीबा so this wind empty circular रहइबो there would be another circle next would be another circle एटा गोटे में हाफ गोटे साइड रू मतलब जति गोटे कहबा गोटे पीस ऑफ साइक्लोन बोली भाबो है ना ये गोटे सर्कल ये गोटे आइसोबार तो दीज आर द व्हाट आइसोबार दीज आर द आइसोबार एमते फॉर्मेशन होची ना अपर एटमॉस्फेयर के कंडीशन देखिबा बट एठी तके ध्यान से देखो द थिकनेस ऑफ क्लाउड इज सो मच ड्यूरिंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन ताली क्लाउड ऑफ थिकनेस केमिति बढ़िला जस्ट इमेजिन करो जेतरो फास्ट क्लाउड फॉर्मेशन हेतला ना सरफेस विल हैव लो प्रेशर
low pressure air will convect off. As the air will convect off due to the condensation, that will lead to the formation of cloud. एबे कोन हेजबो हमरो क्लाउड फॉर्मेशन हैला ना क्लाउड फॉर्मेशन केत्र हो बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन कोन पे हेबो हमको देखिबा जदी कंडेंसेशन है ना तो कंडेंसेशन न हेले क्लाउड फॉर्मेशन हे परिबो नाही कंडेंसेशन हैला परे लैटेंट हीट कथा कोन हेबो जदी हमें लैटेंट हीट कथा देखिबा लैटेंट हीट को लीव करिवो कोन करिवो क्लाउड विल लीव द लैटेंट हीट सो दैट कंडेंसेशन हबो कंडेंसेशन है कि क्लाउड फॉर्मेशन करिवो है ना एमती क्लाउड फॉर्मेशन कर दैट मीन्स हमें लैटेंट हीट जोटा कि ऑब्जर्व कला पर से गैस रे फॉर्मेशन होइतला अगेन दैट लैटेंट हीट विल बी लिफ्ट बाय द दैट वुड बी लिफ्ट से तब कोन करबे छाड़ी देबो सो दैट क्लाउड विल फॉर्म तले हम कोन करबा क्लाउड फॉर्मेशन हबो तो जो क्लाउड फॉर्मेशन हेची से जो लैटेंट हीट रहिची हम कहबा दैट लैटेंट हीट वाज लेफ्ट एंड कंडेंसेशन है कि क्लाउड फॉर्मेशन हेची थ्रू द कंडेंसेशन दैट मीन्स लैटेंट हीट ऑफ जाको हम कहूचे कंडेंसेशन latent heat of condensation तापर कोन हबो क्लाउड फॉर्मेशन हबो तो अगेन भाबो जस्ट क्लाउड जेतर फॉर्मेशन हेकला नियर बाय एटमॉस्फेयर टेंपरेचर बढ़ी जीवो केमिति परबो कारण लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जेतर बाम कहबा कंडेंसेशन हैला हीट एटमॉस्फेयर को छाड़ देला सो दैट ए रीजन रे हीट बढ़िबो क्लाउड रो चारि पटरे हीट बढ़िबो बट क्लाउड कोन रहबो टेंपरेचर कम रहिबो so that this low pressure surrounding region of the cloud will have low pressure and the cloud will move off क्लाउड जेतर ऊपर को मूव करी के जबो ए जगहटा वैकेंट हे जबो अगेन मॉइस्चर विल कम एंड दैट विल फिल दैट रीजन है ना मॉइस्चर आसीबो ताको पुनी फिल कर दबो सो दैट क्लाउड रेमती थिकनेस क्लाउड और फॉर्मेशन हे जबो जो क्लाउड टा आगे फॉर्मेशन हेतला से पूरा टॉप को पळेबो धीरे 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 थिकनेस ऑफ क्लाउड विल इंक्रीज लाइक दिस है ना एटा बुझा पड़िबो काको सो थिकनेस ऑफ क्लाउड्स एमिति इंक्रीज हे जबो देन आमे आपको कहूचे देखि परिबो एठी को प्रकार क्लाउड देखाउचे क्यूमुलो निम्बस क्लाउड यदि हम देखिबा निम्बस क्लाउड्स अधिक हमको देखा जाउचे निम्बस क्लाउड सबटो अधिक निम्बस क्यूमुलस निम्बस देखा जबो जाके हम डार्क क्लाउड बोली कहूचे है ना थिकनेस बढ़ी बढ़ी जाउची निम्बस क्लाउड्स रो देखि परिबो न ए क्लाउड रो दुईटा पार्ट थाए गोटे थाए बॉटम ऑफ द क्लाउड जाको हम कहबा लेट्स से दिस वन वुड बी द बॉटम क्लाउड एंड दिस वुड बी द टॉप क्लाउड टॉप रो गोटे थाए टेल क्लाउड तापरे गोटे थाए लेट्स से आमे आपको कहबा टेल क्लाउड और टेल क्लाउड कहले कोन ना ए जो पोर्शनटा क्लाउड रो दैट विल मूव लाइक दिस एमती एमती मूव करके जाए ऊपर ऊपर मूव करके जाए ना दिस टाइप ऑफ क्लाउड को हमें कहू दैट मींस कोनो से ट्रॉपिकल साइक्लोन आसिया पूर्वरु इंडिकेशन कोन थाए ना ट्रॉपिकल साइक्लोन रो अराइवल जति हमें देखिबा अराइवल इज इंडिकेटेड थ्रू द साइरस क्लाउड्स यदि हमें देखिबा जो साइरस क्लाउड अछि ता द्वारा हमको इंडिकेटेड करा जाय कहले ए जो क्लाउड दीज आर द टॉप क्लाउड एसे ना हमको ए पाखरे देखा जिवो बट ए टॉप क्लाउड गुडा ऊपर ऊपर मूव करी करी जिवो तो दे आर द इंडिकेटर्स सेंटेंस मन को टॉप क्लाउड्स जो व्हाइट कलर क्लाउड गुडा देखाउची है ना से माने होचंदी इंडिकेटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत दूर को देखा जिवो माने बहुत दूर दराज देखा जिवो सो दे आर द इंडिकेटर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एबे हम दिबा देखिया फॉर्मेशन रे formative stage the tropical cyclone starts as a low pressure जोटा मु कहली and wind circulation करबो ता चारि पटे कोन करबो wind circulation करबो because of the what that is a Coriolis force केते एमबी देखो मु ऑलरेडी तुमको कहि देछि कैलकुलेशन करके जेमति कि 90 एमबी 100 एमबी 110 तल डिफरेंस केते नैथिली मु 10 नैथिली so at the formative stage देखो the temperature or the pressure of the center is falls above 10 MB आना वार्म एंड लाइट हेबो एयर टा कोन करबो जो आई थिबो आई रे कोन थे वार्म एयर थे एंड सबोडी ऊपर को मूव करू थाय बा कन्वेक्टिव हे थाय द स्टीफ कन्वेक्टिव एक्टिविटीज टेक प्लेस where there is a low pressure system low obviously the center region will be the low pressure wind speed is very less wind speed जदि हम देखो very low से पर्टिकुलर जगह रे wind speed टा कोन थे लो थाय cloud and rainfalls are disorganized 12 type cloud and what that is the rainfall जदि हम देखिबा disorganized हम किछि ऑर्गेनाइज्ड होबन कि गोटे टाइप ऑफ क्लाउड देखा जिवो सेमते नै बहुत सारा क्लाउड देखा जिवो cyclogenesis is the process for the formation of cyclone that means हमें देखिबा बे फॉर्मेशन केमती होछि ट्रॉपिकल साइक्लोन तो ए पर्टिकुलर जदि हम देखिबा स्लाइड रे जे सी सरफेस टेंपरेचर evaporates and is convected
ताले ये कोन होची एवापोरेट करूची एंड कन्वेक्टेड भी होची दैट मींस हम देखिबा कि जो सरफेस रु एवापोरेशन होची मॉइस्चर कन्वेक्टेड होची क्लाउड फॉर्मेशन होची ये सिस्टम हमें अपवर्ड मूवमेंट होची द एयर राइजेस डाइवर्स some air is forced towards the eye as well तो एटा को टिके मो एठी देखिए देबे जदि हमें देखिबा हियर ना एयर इज राइजिंग तुम देखि परबो एयर इज राइजिंग एंड हियर इज डाइवर्जेंस देयर इज द डाइवर्जेंस कारण एठी कोन रहइबो हाई प्रेशर बट किछि एयर डिसेंड भी करे किछि एयर कोन करे डिसेंड भी करे हियर इन दिस फिगर यू कैन सी some air also descending and this descending air एटा ऑटोमेटिकली वार्म करके रखबो एटा होची हमर आई तो एठी किछि एयर एमते ऑफ करूची एंड किछि एयर डाउन भी आसुची पूरा सेंटर रे दैट मींस ए जो डिसेंडिंग एयर ऑन द आई आर काम कोन नो दैट विल मेंटेन द टेंपरेचर ऑफ द आई से कोन करिबो टेंपरेचर रो आई को मेंटेन करके रखिबो so that let's say temperature was 27 degree that 27 degree temperature will be maintained through the descending paint कारण automatically compressed है जो automatically compressed है temperature बढ़िबो so that 27 degree temperature will be retained ताको से कोन करबो आराम से रिटेन करके रखि परिबो and so that longevity of that tropical cyclone जो जदि हम देखिबा longevity टा बढ़ी जिवो obviously तो longevity डिपेंड करे कहां पर वार्म वाटर ऊपर longevity डिपेंड करे तो से जगह को हमें देखिबा थ्रू द डिसेंडिंग ऑफ एयर ताको से मेंटेन करिए रखे थाए तो सेति पे एठी जदी हमें देखिबा हियर यू कैन सी दैट जोटा लिखाई छी एयर राइजेस डाइवर्स हो ऊपर एंड सम एयर इज फोर्स्ड टू डिसेंड किछि आसीबो towards the eye जोटा कि हमें सिंक करूचे किछि आई ऊपर सिंक करूची कोन पे सिंक करूची बिकॉज़ ऑफ द कोल्ड एंड हेवी ना कंप्रेशनल हीटिंग आई को कोन करिवो आई को वार्म रखिवो एंड क्लियर कंडीशन रखिवो दैट मींस आई रे जदी हमें कहिबा काहे के आई काम रहउची व्हाई द कोर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज वार्म clear condition and calm थाए because of the descending air because of the what descending air the descending air will make that region into calm and composed evaporation increases and the cyclone strengthens the jete evaporation habo as the evaporation will go on matlab so much okay that duration of evaporation and the amount of evaporation will definitely that will decide that what will be the longevity this stage 2 to 3 days हमको लागियो formative stage रे mature stage रे हम कोन करिया देखिबा in this stage the upliftment of warm air and the light air the second stage रे कोन हबो ना moisture जोटा रहबो with the presence of the moisture air कोन हिजो condensation हबो cloud formation हबो latent heat of condensation हबो जहां मु तुमको कहितली है ना that means those warm air which was uplifted because of the lighter because of what heated off that will condense to form what cloud obviously that will form cloud as the cloud will form what will happens that the cloud thickness बढ़ी जिवो है ना मु तुमको कहितली देखो एठी गोटे स्पेस खाली हबो ताको पुनी फिल करिवो है ना ये एमती ग्रेजुअल प्रोसेस चल थाए तो ग्रेजुअल प्रोसेस रे कोन करो सेमती क्लाउड फॉर्मेशन हे थाए फॉर एग्जांपल लेट्स से हियर द क्लाउड इज फॉर्मड cloud formation hela pare heat will be left to the atmosphere obviously that would the heat would be left in terms of latent heat of condensation latent heat of condensation so that it got a low pressure create karibo the cloud will move off ये ताको push करिवो cloud move off करबो ये जगह खाली हिजबो अगेन एठी cloud formation हबो एमती vorticity of cloud thickness बढ़िबो से जोडा तुम लिखै छी space is filled by the fresh moisture आसीबो latent air again एमती cloud रो formation वे condensation हबो so that supply करिवो एमती छै thunderstorm हेई पारे no doubt ना मैक्सिमम हम स्पीड देखिबा बहुत ही ज्यादा स्पीड थाए कारण जो आई चारिपटे जो सराउंडिंग रसेस टू द रसेस इन एंड अंडरगोस द डिफ्लेक्शन ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स ना ऑलरेडी हम पढिचे कि लो प्रेशर होची कोरियोलिस फोर्स द्वारा कोन जो डिफ्लेक्टेड हे जबो ता द्वारा कोन हे जबो ना सेंटर रीजन टा क्लोज्ड हे जबो क्लोज्ड हे गेला पर सेटा आई हे गेला आ ता साइड रे जोटा रहबो सेटा हैला आई वॉल
दैट मीन्स ए जो फास्टेस्ट विंड्स जोटा रोटेट करूची जाको हमें vortex फॉर्म रे रोटेट करूची ताको हमें vortex फॉर्म काहे कि लिखाई छी here you can see in the here you can see how this is moving off तो एटा गोटे vortex फॉर्म तेणु आम ताकू कहबा vortex फॉर्म रे कोन करूची से मूव करूची ऊपर को जाउची सो दैट आम ताकू vortex फॉर्म बोली कहूचे आई वाल फॉर्मेशन हो and all the wind that is carried upward loses its moisture and become the cold and dense hela par puni तळको आसीबो cylindrical shape रे अछि ऑलरेडी देखि सरछि आमी mature stage pressure and wind speed does not change in this stage too much change hoba nahi there is no further that is deepening of the pressure occurs and the area covered by the strong winds is what largest in this stage the mature stage रे कोन हबो ना धीरे धीरे हम देखिबा कि जो अदर आइसोबार फॉर्मेशन हो सिंपल मुकेबेटी कोन हो मैच्योर स्टेज रे सो मेनी isobar formation हो as the number of isobar forms that will definitely indicate that the tropical cyclone is going to be very strong तो एटा टिके मन रखो then as well dissipating stage that means जाको हम कहउछे cyclolysis cyclolysis stage बाद जाको हम कहउछे end of tropical cyclone now how tropical cyclone decay tropical cyclone केमति खराब हो तांको system through the what landfall a tropical cyclone जदि हम देखिबा landfall system जाको हम landfall रो मीनिंग कोन that is when the tropical cyclone comes over surface को जेतले हम land ऊपर को आसी जे tropical cyclone ताको हम कहउछे कोन that we will talk about the जाको हम कहउछे landfall तो landfall कोले सिंपल जदि मु कहबी landfall कोले कोन now when tropical cyclone comes over surface land surface को जेतरा आसी जो सेटा landfall रो ताको हम कहउछे landfall है ना तो landfall जेतरा tropical cyclone land ऊपर को आसी जो that would not be able to get the moisture as it would not be able to get the moisture so it will die that means हम कहबा ताको कहबा खत्म हे जो tropical cyclone weaken हे जिवो it will weakens and rainfall कम जिवो rainfall अवश्य चलिबो गोटे दी दिन rainfall चलिबो through because of the low pressure then it will finish off एबे तुम देखि परिबो here the temperature how the air is moving and the air will circulate like this then number of air will circulate this is the development stage okay this would be the stage 1 2 3 and 4 now बुझा पड़ियोनी फिगर रु किछि characteristics of tropical cyclone जदि हम देखबा साधारणतः elliptical shape थाए it's not like rounded न थाए पूरा एमति नाही कि पूरा rounded न थाए elliptical shape थाए जदि हम देखबा आर डायमीटर केते ही परिबो 300 किलोमीटर ही परिबो डायमीटर तो जदि हम देखबा 300 किलोमीटर ही परिबो विंड वेलोसिटी किछि भी परे 120 ही परे 150 ही परे 200 ही परे किछि भी परे one of the हम एकबा peculiar characteristic of the tropical cyclone जाकि हम देखिबा कि एटा गोटे storm surge कराए that means हम देखले डायमीटर देखले wind speed देखले wind speed किछि भी परे 250 ही परे 300 ही परे 100 ही परे 180 ही परे आर longevity बेसी नहीं maximum 5 days था longevity like it's not like the temperate cyclone that will sustain for the 15 days 1 month it will sustain like 5 days to maximum 7 days maximum worst case रे हम कहबा storm surge देखा जे तुम जानते storm surge रो अर्थ होला पानी उठी आसीबा कोन तरीके समुद्र पानी उठी आसीबा ताहु को जे storm surge तो tropical cyclone जेतरा हिट करे से टाइम रे storm surge मध्य देखा जाय high rainfall देखा जाय these are the what impact the path of tropical cyclone so parabolic thai for example it will move like this tropical cyclone move like this kon tane india adu ko asla apni bangladesh kolela kemti parabolic path initially it will move like this then move like this ye sobole semi parabolic ame koi pariba
ओके तो आम जे देखा ताले यार पैराबोलिक पाथ थाए ना केते डिग्री ऑलरेडी आम जानी छे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर केते डिग्री जाए जाई परबो जदि आम देखिबा मैक्सिमम इट कैन मूव अप टू 30 डिग्री ता ऊपर जाई परबो नाही ना क्वेश्चन आसुची जो इंपैक्टेड एरिया टा 30 डिग्री अधिक काहे के होबनी कारण 30 डिग्री ऊपर को गले टेंपरेचर कमी जिवो ना हाई प्रेशर आसी जिवो लो मु कहबी तो 25 30 डिग्री मु कहबिनी इट विल बी 25 इज द बेस्ट आम ताको कहबा 25 इज द बेस्ट है ना कहले 25 रे खत्म हो जिवो 25 कहले 0 टू आम कहबा 30 टू 25 से भितरे तुमको देखा जिवो कोन ना ट्रॉपिकल साइक्लोन रो डिस्ट्रक्शन टा ए भितरे देखा जिवो 30 डिग्री को आसी गले आम जानि आम 25 रो 35 टा कोन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ना तो हाई प्रेशर रे साइक्लोन केमते सस्टेन करिवो ओके डन सेति में आगु को से जाई परिवो नाही ट्रॉपिकल साइक्लोन डाइज एट 30 डिग्री latitude बिकॉज ऑफ द कूल ओशन से कूल ओशन हेई पारे वेस्टर्लीज हेई पारे किंबा हमर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हेई पारे किछि हेई पारे सेति में 30 डिग्री ऊपर को से जाई परिवो नाही तार डेथ हेई जबो here you can see the parabolic path of tropical cyclones let's say tropical cyclone origins here it will move like parabolic path se tar parabolic path रे move करिवो and this will strike the Myanmar coast okay Myanmar coast रे से पहुंच जिवो सेति पई जदि हम देखबा if tropical cyclone forms in this particular region then it will be the striking point चिटगांव if tropical cyclone forms here then it would be the striking point if tropical cyclone forms here then Odisha will be the striking point कारण से parabolic path रे जिवो सेति पई फानी कथा तमे जानि छ फानी 80 फॉर्मेशन हेतला so फानी was formed like this in this particular श्रीलंका रे ए पर्टिकुलर जगह रे फॉर्मेशन हेतला सेति पई से ओडिसा रो राडार टे आसी गेला परफेक्टली ओडिसा को स्ट्राइक कला तो बुझ तणु करी जेतबे ट्रॉपिकल साइक्लोन ए पर्टिकुलर जगह रे फॉर्मेशन होची तार चांसेस टू हिट द ओडिसा इज ऑलमोस्ट 99.9% चांस and if that is forming here then it will move like this okay parabolic path रे से तार जो so formation zone अनुसार हमें डिसाइड करबा कि what could be the striking point now question होची कोन जे आमे देखबा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जे जो मूव करूची केमिति काहे कि मूव करे कारण तार मूवमेंट किछि जिंस को काउंट करा जाय लाइक वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर ट्रॉपिकल साइक्लोन जेतले मूव करे से सबले वार्म एरिया को मूव करे जोठी जोठी वार्म वाटर छिवो से कोल्ड को मूव करिवो नै कारण कोल्ड वाटर मींस व्हाट हाई टेंपरेचर कोल्ड वाटर से तार डेथ हे जो तनु से साडे केबे मूव करिवो नै so that would not move towards the cold water tropical cyclone will always move towards the hot water or the warm water ये पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन से हम देखिथिले आ ओडिसा रे पहुंचबार रीजन कहितली ओडिसा रे पहुंचबार रीजन कोन व्हाई ओडिसा इज द हॉटस्पॉट प्रथम देखो लोकेशन ऑफ ओडिसा ऑब्वियसली जदि ए रीजन रो फॉर्मेशन होची ओडिसा को स्ट्राइक करियो बिकॉज़ ऑफ तले ओडिसा रे काहे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन अधिक होची बिकॉज़ ऑफ द पाथ ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन पैराबोलिक सेकंड डेल्टा होची हम पाखरे ओडे लार्ज डेल्टा होची दिस इज द लार्ज डेल्टा एरिया और डेल्टा टा केमती होची लाइक इट्स लुकिंग लाइक ए समुद्र आड़ को मूव कला भले देखा होची डेल्टा आल्सो अट्रैक्ट द साइक्लोन ध्यान से मन को डेल्टा कोन करे साइक्लोन को अट्रैक्ट्स करे तन करे डेल्टा अनदर रीजन थाए देन थर्ड हम देखिबा लोकेशन ऑफ ओडिसा केमती 17 रु 22 है ना तो 17.5 टू 22.5 तो लोकेशन दैट मींस ट्रॉपिकल साइक्लोन स्ट्राइक करियो के 25 30 तो ये भीतर ओडिसा आसी जाउची नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन ओडिसा रे काहे ट्रॉपिकल साइक्लोन स्ट्राइक करूची 480 किलोमीटर कोस्टल लॉन्ग लाइन कोस्टल लेंथ होची कोस्टल लेंथ भी अधिक अछि है ना सो दीज आर द इंपोर्टेंट रीजन यदि हमें देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन ओडिसा रे पहुंचबा कारण पाथ डेल्टा द लोकेशन एंड लेंथ ऑफ द कोस्टल रीजन
सो ताले नेक्स्ट आमे नेक्स्ट टॉपिक को जीवा। अच्छा एथरे कार किसी डाउट अछि जो संगीता मैडम बुझा पड़िबो इथा आज्ञा सर है ना लिप का बुझा पड़िबो पाथ हमें देखि देले है ना कि पाथ रे हमें देखि देले कि केमिति पैराबोलिक पाथ रे जाउची तार सब किछि हमें देखि देले कि पाथ केमिति पैराबोलिक पाथ होउची फॉर्मेशन कमची आईवाल कोन ये सब हमें देखि देले। तो बे आउ गोटे स्लाइड को हमें जीवा। मानसून तो आज पढ़ाई नहीं बट खाली ठीक है हमें क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देखी दवा। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हमें सार देइचे तो किसी डाउट नहीं क्लाउड भी सार देइचे प्रेसिपिटेशन सार देइचे हमरो। अच्छा हाइड्रोजन साइकिल कंप्लीट कर देबे अछि एटा छोटिया टॉपिकटा हाइड्रोजन साइकिल वाटर साइकिल बस ए फिगर ही बुझाई देबी मो किछि एला बेसी किछि आकु ये करबेनी कने एटा बहुत इजी टॉपिक। अच्छा हाइड्रोजन साइकिल देखियो बस एटा आठो शायद इजी टॉपिक नहीं हाइड्रोजन साइकिल जहाँ को हमें ना हाइड्रोजन साइकिल हमरो सिलेबस रो कोठी अछि। प्रथम कथा क्लाइमेट देखिबा हाइड्रोजन साइकिल डायरेक्ट मेंशन हिची प्लस जोटा हमर एनवायरमेंटल पार्ट रो अछि बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो जो हमर बायो जियोकेमिकल साइकिल सेथरे भी ये आसीबो प्लस ऑप्शनल पेपर 2 रे भी अछि ताले पेपर 1 रे दीटा जगह रे अछि ते ये सिलेबस रे तीनटा जगह रे मेंशन हिची दैट मींस क्लाइमेट रे में पढिबा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी रे भी अछि प्लस पेपर 2 रे भी अछि। तलिए लास्ट ईयर ही पचार देछि ओपीएससी आ ऊपर बायो जियोकेमिकल साइकिल 60 मार्क्स रो बहुत इजी। एबे हम देखो बायो जियोकेमिकल साइकिल रो गोटिए साइकिल होछि हाइड्रोजन साइकिल बा में हाइड्रोजन बा वाटर साइकिल केमिति होछि। प्रथम ये होछि हमर सी सरफेस ये होछि हमर सी ना सी रु कोन होछि एवापोरेशन एवापोरेशन केमिति हो बिकॉज़ ऑफ द सन रु जो शॉर्ट वेव्स आसुछि तनो एठी ए डायग्राम रे लिखाइनी मो डायग्राम रे कोन कली शॉर्ट वेव्स कर देली ना शॉर्ट वेव्स इज कमिंग दैट विल बी ऑब्जर्व बाय द सी सरफेस इता को ऑब्जर्व करिवो ये ऑब्जर्व कला परे कोन हिजबो ना दाको हम कोचे लैटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन latent heat of evaporation ना evaporation हैला पर that means water state change है जो बर्तन से gaseous stage को आसी जो moisture रे convert है जो now it will be convert into moisture है ना गोटे गोटे हमें स्टेप वाइज बा। तो प्रथम कोन हैला सन रो कोन आसुची ना शॉर्ट वेव्स को कैप्चर कर दैट मींस दैट कुड बी रिसीव द हीट हम कहबे रिसीव कला किए वाटर रिसीव कला पर जहा को हम कोचे लैटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन हैला पर मॉइस्चर रे कन्वर्ट हिजबो है ना। एबे से मॉइस्चर टा पुनी क्लाउड रे कन्वर्ट हिजबो केमिति कंडेंसेशन एबे से कोन करबो ना कंडेंसेशन हो ताले में स्टेज अगेन हम देखिबा ताले फर्स्ट स्टेज रे कोन हैला ना शॉर्ट वेव्स आसेला एवापोरेशन हैला सेकंड स्टेज रे हम देखिबा कोन हबो तो सेकंड स्टेज जदि हम देखिबा पर्टिकुलर गला सेकंड स्टेज आरो थर्ड एटा तो ना एटा हम पर देखिबा मो एई पडु जाई छै है ना तो छाड़ देंतु से कोठी थर्ड फोर्थ हम देखिबानी आम अनुसार पडिबो डोंट वरी। तो एठी कोन हैला मॉइस्चर बहुत सारा मॉइस्चर हे गेला से मॉइस्चर केमथि होबो कंडेंसेशन हैला परे बेले मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंडेंसेशन द लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन आसीबो सेतबे ताले कोन रहइबो ना लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहले हीट को छाडिले जाय कि से क्लाउड रे फॉर्मेशन हो क्लाउड फॉर्मेशन हे गेला ना जो क्लाउड फॉर्मेशन हैला दैट विल कॉज रेन क्लाउड कोन करबो रेन करबो ना रेन माइट दैट मींस हम कहबा कि क्लाउड वंस फॉर्मेशन हैला पर रेन फॉर्मेशन हो क्लाउड अछि माने रेन हो
तो रेन हम ना रेन कुड बी ओवर हियर दैट मीन्स आम कह रेन टा सी सरफेस ऊपर ही पारे किंबा से क्लाउड टा मूव करके आसिकी लैंड रे भी प्रेसिपिटेशन हो पारे लैंड रे भी प्रेसिपिटेशन हो पारे तो एठी हमें प्रेसिपिटेशन लिखिबा नाही कारण ओशन रे सबोले ओशन रे आइस फॉल तो हबो नाही स्नोफॉल तो हबो नहीं जदि हबो हां अदर किछि फॉर्म हे पारे तो प्रेसिपिटेशन एठी किछि वर्षा हबो और जदि क्लाउड टा मूव करके लैंड को आसी गेला लैंड रे भी वर्षा हबो दैट मीन्स हमें कहबा सेम क्लाउड इज मूविंग टुवर्ड्स द लैंड को आसिला परे लैंड रे से दी जगह रे रेनफॉल करिवो बा प्रेसिपिटेशन ईदर दैट विल कॉज प्रेसिपिटेशन ओवर द माउंटेन रीजन और प्लेन रीजन प्लेन रीजन रे हेले सेटा रेन हबो माउंटेन रे हेले सेटा स्नोफॉल हबो होप एटा तो बुझा पड़ियो समस्त को एतर किछि असुविधा नै दैट मीन्स हम कहबा ए पर्टिकुलर जगह रे भी प्रेसिपिटेशन हबो एंड सम क्लाउड्स आर मूविंग दैट इज आल्सो कॉज तो एठी कोन हबो ना स्नोफॉल हबो एठी कोन हबो स्नोफॉल जेम सेत में लिखा छि सब्लिमेशन तो डायरेक्ट कोन हबो ना स्नोफॉल एठी हमें डायरेक्ट सब्लिमेशन भी हे जाई पारे जोटा कि कोन हम कहबा गैस रु सॉलिड रे कन्वर्ट हो जाई पारे सब्लिमेशन तो एबे हम देखिबा ना जो रेन होची पर्टिकुलर जगह लेट्स से एटा हम प्रेसिपिटेशन होची ना ए फॉर्म रे एठी रेन ही पारे हियर कुड बी द स्नोफॉल ही पारे रेनफॉल ही पारे अच्छा लेट्स से हमें रेन कथा नबा स्नोफॉल कथा हमें नबा नाही जदि रेन होची दैट मींस रेन ए प्लेन एरिया रे भी हबो माउंटेन एरिया भी हबो माउंटेन रे जोटा रेनफॉल होची दैट वाटर विल बी रन ऑफ ए कोन हिजबो ऑब्वियसली दैट वुड बी रन ऑफ हिजबो ना रन ऑफ हेकी कोठी पहुंचबो लेक रे पहुंचबो एटा होची हमें लेक नै गेले अच्छा जेमति एठी हम देखबा गोटे स्ट्रीम थ्रू द स्ट्रीम्स दैट वाटर जेमति एटा देखबा गोटे स्ट्रीम्स थ्रू द वाटर मतलब स्ट्रीम्स द वाटर फ्रॉम रन ऑफ हेकी आसी एठी पहुंचला पर किछि पर्कुलेट डाउन करबो जेमति एठी हमर सिंबल दियै छि ए पर्टिकुलर जगह रे किछि पर्कुलेशन करबो सम वाटर विल पर्कुलेट एठी कोन आइछबो पर्कुलेशन ऑफ वाटर है ना तो पर्कुलेशन ऑफ वाटर हमको देखा जबो पर्कुलेट करि जबो माने ग्राउंड वाटर को से कोन करूची रिचार्ज करूची ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कला आउ किछि एवापोरेशन हे जबो एठी भी एवापोरेशन हबो ना किछि रिचार्ज करबो किछि एवापोरेशन करबो है ना सेम टाइम एट ए टाइम सब किछि चलची ना आउ किछि कोन ट्रांसपिरेशन करबो एठी कोन होची ना ट्रांसपिरेशन गच्छ भी कोन करबो गच्छ तार ग्राउंड वाटर को ऑब्जर्व कला ट्रांसपिरेशन ताले सेम टाइम रे हम देखिबा कोन कोन होची ना किछि वाटर रन ऑफ हे के आसुची दैट इज टू द लेक बा लेक को पॉन्ड जा भी हो ना किछि से रिचार्ज करूची है ना बा में जाको कहूची हमें पर्कुलेशन आउ किछि एवापोरेशन भी हिजबो सरफेस रु आउ किछि एवापोरेशन दैट इज द ट्रांसपिरेशन हबो अगेन से पुनी कोन करबो क्लाउड कन्वर्ट हबो अगेन कोन करबो रेन हबो तो एमती रहिबो आउ किछि वाटर कोन हबो जो वाटर रिचार्ज कला ग्राउंड वाटर को रीच कला तो एटा कोन हला वाटर टेबल फॉर्मेशन हला दैट मीन्स एटा कोन करबो वाटर टेबल फॉर्मेशन एंड दैट वाटर टेबल विल हैव लिंकेज विथ द सी ध्यान से देखो ये वाटर टेबल केमती आसी कि पुनी तळे 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 ओशन रे मिसिबो सो दैट जो ओशन वाटर आस्थला से अगेन इट विल रिटर्न बैक टू द ओशन सर्कुलेशन कंप्लीट ना एठू वाटर एवापोरेट करिक गला क्लाउड फॉर्मेशन हला किछि क्लाउड मूव कला एठी रेनफॉल हला किछि सब मतलब पर्कुलेशन हला से ग्राउंड वाटर टेबल रे कन्वर्ट हला ग्राउंड वाटर टेबल जाकी मिसी जिवो एठी तळे तळे पुनी एठी आसी वाटर पुनी एवापोरेट हो दैट वुड बी द सर्कुलेशन बस तुमको एते शॉर्ट केमिति हमें लिखिबा थाले आको हमें लंबा चौड़ा करी खेल लिखिया कथा केमिति फॉर एग्जांपल मु आको आंसर रे लिखिबी मु लिखिबी water cycle one of the most important cycles of among all biogeochemical cycle कारण आ बिना जदि ये न हबो रेनफॉल हबो ही नहीं लैंड रे तण करी वाटर साइकिल इज इंपोर्टेंट फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ ओके ओवर द लैंड एंड आल्सो ड्रिंकिंग वाटर भी हमको मिलिबो फ्लो ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये सब आ ऊपर डिपेंड करे the water cycle एमती हमें आगे water cycle definition कोन ना that is the what changes of the different form the water changes from liquid to gaseous to again liquid to solid तो rotation change and rotation of water from sea to land and land to sea जाको हम कहै हाइड्रोजन साइकिल जाको हम कहै हाइड्रोजन साइकिल और the water cycle now the cycle will starts from कोठू एबे हमें एठू स्टार्ट करबा the cycle will start from the evaporation will cause due to the what heating of the sun तो heat आसीबो heat को ऑब्जर्व कला पर letting heat up
what that is the evaporation. Heat will be absorbed, that will transfer the liquid form into the gaseous form. Thus gas will move up, and adiabatic expansion ele condensation habo. Condensation bale heat ko se chhadi debo, jaha ko che latent heat of evaporation, so that will form the cloud. Ko pakar cloud na cumulonimbus cloud, that will cause rain in this particular region, and some cloud will move to the surface. That cloud will cause rain in the mountain region and plain region as well. बस एमती खाली लंबा चौड़ा करके हमको लिखियार अछि. Again, that the mountain जो rainfall होची, that will convert into runoff. Runoff है कि से किसी lake को राशि को water जमा हबो, or that water might be shipped through the rivers बा stream है कि पुनी sea राशि पहुंची परे. Here एठी हम देखि परिबा, इधर से lake को जाई परे, नहले गोटे हम river जमते गंगा भलिया river को direct जाई कि से पुनी Bay of Bengal मिसि जो, so that तार cycle complete है जो. Like here you can see the stream. Okay, एठी हम देखिबा गोटे stream अछि, otherwise lake हम नहीं हो. जदि स्ट्रीम है कि डायरेक्ट पहुंची गला सी रे, दैट इज द कंप्लीट. अदरवाइज जदि लेक को आसिला, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करिवो, एंड सम विल आल्सो एवापोरेट फ्रॉम हियर. जोटा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कला, दैट विल बी ऑब्जर्व थ्रू द व्हाट प्लांट. से प्लांट को ऑब्जर्व करबो, अब निजर ट्रांसपिरेशन रे अगेन से कोन करबो, एटमॉस्फेयर को छाड़ देबो. तो at the end of the day, what the groundwater table water will also meet with the sea water below the surface, so that the water will again return back to its destiny or the original place, and converting the cycle को complete कर दबो. ये होची वाटर से ना. एथरे बेनिफिट कोन हमें कहा, बेनिफिट हैला एठी हमें केबा फ्रेश वाटर मिलिला, हमको फ्रेश वाटर. लेक फॉर्मेशन हैला, रिवर रे पानी आसी गला, गछ को पानी मिल गला, एक्वाटिक लाइफ को हमें देखबा एठी मिल गला, फॉरेस्ट रो ग्रोथ होची, स्नोफॉल होची, एठी हमें स्नो रो फॉर्मेशन हबो, बहुत सारा बेनिफिट. तो बेनिफिट फटाफट मुख लिखि दोची. फर्स्ट हैला हमको स्नो फॉर्मेशन होची हायर रिच रे, कोठी रेनफॉल होची, रिवर फ्लो होची, नले रिवर तो फ्लो कर परिबो नहीं, लेक रो फॉर्मेशन होची, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करूची, वाटर टेबल फॉर्मेशन होची, तादरा नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल्स वाइल्ड लाइफ माने सस्टेन करि पाउचंती. तो ये थिबो हमरो वाटर बा में जाकू कोचे हाइड्रोजन साइकिल. एठी तुम देखि परिबो केमति प्रेसिपिटेशन होची, एवापोरेशन हैला, कंडेंसेशन हबो, क्लाउड आसिला, मूव कला, एठी वर्षा हैला, पुनी रन ऑफ हबो, रन ऑफ है कि पुनी आसीबो, एठी पर्कुलेशन हबो लिखाई छी, पर्कुलेशन हैला पर पुनी वाटर तळे 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 तळे, so that water will again move. तो पूरा ये साइकिल कन्वर्ट हो जिवो. एठी पर्कुलेशन है गेला, पर्कुलेशन है कि वाटर टेबल रे कन्वर्ट हो जिवो से. ओके है ना, पर्कुलेशन एंड दिस पुट द मीटिंग पॉइंट. एटा हम नै जबा बिलो सरफेस. एटा को बस एति कि मन रखबे पड़ा में के दिस पुट द बिलो सरफेस. तेणु करके कहा जाउची के सी लेवल जदि राइज करिवो, जो हमर वाटर टेबल रे ना, वाटर टा रिवर्स मूव करिवो. ए वाटर टेबल रे वाटर एमती मूव करूची, आ जे सी लेवल राइज कर जो वाटर टा रिवर्सल मूव करो, सो दैट ए रीजन रे सालाइन वाटर है जो ट्यूबवेल बसेले सालाइन वाटर आसीबो ना, बुझा पड़िबनी है ना. तो जोटा कि हमें कहबा इनग्रेस करिवो, सी वाटर विल इनग्रेस, that is the ingression of sea water, that will lead to the what saline water आसीबो, कोथरे ट्यूबवेल रे saline water आसीबो. तनु करके सी लेवल बढ़िले हमको कोन आइजबो, ग्राउंड वाटर टेबल भी चेंज हो जाई पारे इन द कोस्टल रीजन. पर्टिकुलरली मु को रीजन कथा कहबी, कोस्टल रीजन रे चेंज हो जिवो. डन है ना. तो ना इटा बुझा पड़बनी, होप बुझा पड़बो. एटा एते त बेस किछ नाही बुझिया पी ना, कोन कहउछन संगदावना बुझा पड़बो ना.